Okay, so let me start with the little bit of revision of our previous lecture, that what we have discussed and what we are going to do in this particular stuff. Just a second. Okay, so in the last lecture, hello, yes, please, everyone. So in last lecture, what we have discussed? We have discussed about that. What is of the this particular point? What are the communication standard related to telephone network, cable TV network, and in telephone network also, what is a traditional telephone network are there, as well as when the telephone network is going to be updated in a DSL, digital subscriber line. So how it's going to be upgraded? What are the changes in a DSL? What is the bandwidth allocation in that DSL? As well as we have discussed about the video transmission. So through the television broadcasting services, okay, or we can say cable TV network, how the cable TV network is going to be work, as well as if you want to add internet services in that one. So what are the merger of both of them, and how the data as well as video is going to be transmitted? So that bandwidth and all type of the stuff we have discussed in the last lecture. Okay. So overall, up to this particular point, we have discussed about the basic technology related to telephone, cable TV network with the services of either voice communication, or we can say video communication, or we can say video transmission, along with how the data is going to be associated with them. Such type of the stuff we have discussed so far. Now today, and from this lecture onwards, we are going to see the another type of the technologies which is associated with the, I can say, our day-to-day life, and we all of us are using this technology on every day. In a branch of electronics and communication, this whatever the stuff that we are going to discuss today, it is having a complete one subject. Okay, so there is a brief on this particular technology. It's not going to be that much of deep, because in deep there are several fundamental concepts are there, but how it is going to work, that is oral stuff we need to see over here. Okay, so whenever it is started, as I have told you the history of this particular uh, communication technology also, like first there are that mobile phone is given by the IBM. Okay, and that's a very huge phone is there, and at that time with IBM and with the Motorola, IBM or Motorola, they are having having kind of the race to create a first mobile telephone, and suddenly IBM won the race, and his CEO has just stepped down from his office, and on the one regular street, he is just talking on the phone with the CEO of Motorola. He like, देखिए मैंने मोबाइल बना दिया और वो दुनिया के पहले मोबाइल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. So such type of the race started. People are getting noticed. Newspaper में आया, getting a huge publicity, and it's a rise of the mobile communication. I remember that on the time of when I was very child, okay, near about 7 to 8 years. Okay, at that time, people are talking like that, कि like एक दिन खेतों में बैठे बैठे लोग फोन पे बात करेंगे. तो उस टाइम लगता था यार ऐसा थोड़ी ना होता, अभी ये टेलीफोन एक है, और पूरे गांव में जो भी बड़ा जमींदार था उसके पास ही वो टेलीफोन रहता था. एंड वेन एवर दिस टेलीफोन इज गेटिंग रिंग, तो 4-5 घर तक उसकी आवाज, इतना बड़ा टेलीफोन का रिंग रहता है. और किसी को भी टेलीफोन आया तो वो क्या करे, भाई इस भाई को बुला के लाओ. बाद में वो रिसीवर रख के एक बंदा दौड़ता था, वहां आपका फोन आया है, जल्दी आइए. बाद में फिर से फोन. लाइक this is the process that my grandfather has just seen this stuff. उसके घर पे टेलीफोन था तो इस तरह से सब दौड़ते हुए, टेलीफोन आया तो सब लोग इकट्ठा होते कि कैसे बात होती है. एक बंदा जो राजकोट में, अहमदाबाद में या मुंबई में बैठा हुआ है, वो इधर बात कर रहा है कैसे. That's our first television, and that's a very kind of the curiosity. Right now हम अभी कैसे क्यूरियस होते हैं, आईफोन 13 का नया एक मॉडल आया, इतने 80 मेगापिक्सल कैमरा, ये फ्लिप फोन, ये कर्वेचर टेक्नोलॉजी, वी आर फैसिनेटिंग विद दिस वन.
बट सोचिए जब किसी के पास ऐसा था ही नहीं कि बिना तार के बात नहीं हो सकती, एट दैट टाइम दिस टेक्नोलॉजी केम एंड जो भी चीज मैं बता रहा हूँ लाइक दैट टेक्नोलॉजी केम इनटू द यूएस और इन यूके आफ्टर द 15 to 20 years, after the 15 years it come to the India in full fledged कि वहां पे लोग बात करना टावर सब लोग चालू कर दिए थे, उसके 10-12 साल के बाद हमारे पास I remember that on 19 I can say 2001 or in 2005 near about, at that time everybody don't have the mobile phone. सबके मोबाइल फोन रखना मतलब एक स्टेटस की बात होती है, मोबाइल फोन, क्योंकि उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। तो आप फोन करो तो भी पैसा भरो, फोन किसी का आए तो भी पैसा भरो। But after that, the technology has evolved and government has decided that किसी को फोन करने पे चार्जेस लगेगा, फोन उठाने में चार्जेस नहीं लगेगा। तो क्या करता थे, लाइक पूरे फैमिली में या पूरे घर में एक फोन रखते थे और उसमें एक पैसे वाला आदमी था जो रिचार्ज कर सकता था, या फिर पोस्ट पेड चलते थे उस टाइम पे, इतना बिल आएगा मंथली, ये रिचार्ज करो, 500 रुपए का रिचार्ज एक महीने, दैट्स अ हाई चार्जेस आर देयर, बट एवरी टाइम जस्ट अ सेकंड फॉर व्हाट, ओके। सो एट दैट टाइम एक बंदा था जिसके पास पैसा होता था, वो रिचार्ज करो, बाकी के सब सिम कार्ड लगा के रखो, जिस किसी को फोन करना है उसको मिस कॉल दो, वो सामने से कॉल करेगा और एक बंदे में से ही ये सब हमने किया है। अगर आप मम्मी पापा को पूछोगे ऐसा हुआ, यस, likewise we have done, but then after mobile phone become cheaper and big boosting of the Indian telecommunication is done when I'm considering those company, if you have heard about Uninor, Tata Docomo. Have you heard about these two companies? I have experience with it because on whenever the Tata Docomo and Uninor is going to be launched, on the same time उसी टाइम पे आप 6 रुपए में 1 घंटे बात कर सकते हो। ओके, 6 रुपए में आप 1 घंटे बात कर सकते हो रात के 9 बजे के बाद। सो पहले क्या करते थे कि दूर कोई लंबी बात है, किसी की शादी हुई है, सगाई हुई है, तो वो बंदा एसटीडी से ढूंढता था कि वहां पे 9 बजे के बाद 11 बजे तक बात। नाउ इट इज दैट सेम सर्विस कम टू द मोबाइल फोन, 9 बजे के बाद कॉल करो, 1 घंटे का 6 रुपया। सो दैट इज गोइंग टू बी फिजिबल, तो कॉल रेट इज गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग, लाइक पहले 1 मिनट के लिए 3 रुपए 4 रुपए, नाउ इट्स रिड्यूस टू 1 रुपी, देन हाफ पैसे, लाइकवाइज, एंड देन आफ्टर now onwards कॉल मुफ्त में, इंटरनेट का चार्जेस लो, ठीक है। Okay, so what are the stuff is going to be right now? Now people are don't bother about call, they bother about the internet, because बात सबसे हो रही है, इंटरनेट एक्सेस करने को मिले तो वो कंपनी अच्छी है। अगर आपको एक दिन में 4 GB डेटा मिलेगा अच्छी स्ट्रेंथ से, तो आपको कंपनी चूज करोगे, चाहे आपका कॉल 2 या 3 बार ड्रॉप हो, कोई बात नहीं, बाद में घुमाएंगे ना कॉल। So data is important now. On that time, call is important. So as the generation increase, device is going to come into the Indian market, that evolution, and that's why we all are here, because you are computer engineer, I'm electronics engineer, and due to those rise of technology, we are here and discussing this. Okay, but what is the basic question on this particular chapter? How those mobile communication work? एक डब्बा जिसके ऊपर आप फोन डायल करो और आप जिसको डायल करते हो उसके साथ आपकी बात हो रही है बिना तार के, कैसे? That's the first thing in our mind. Okay, so to do that, first of all we require a headset, or we require such gadget which is having a capacity, or which is having a capability to do those tasks what previously telephone is doing. लाइक आप कुछ नंबर डायल करो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उससे जनरेट होगा जो आप तार से भेजते हो। नाउ यू नीड टू सेंड इट थ्रू द वायरलेसली। नाउ हाउ द वायरलेस इज गोइंग टू वर्क? इट्स रिक्वायर्ड द एंटेना टू कम्युनिकेट विद बोथ ऑफ देम। तो आप क्या किया, वट एवर द डिवाइस इज देयर, that device is having some features, some software, dedicated hardware is there, dedicated small motherboard is there, memory storage device are there, keypad are there, and all the stuff are there.
And whenever this all the stuff is going to come to one place, that communication is going to establish with the others with the, we can say, by using that particular chip. That chip is considered as an antenna. Okay, and in an antenna, that is actually we can say that's my story also. Like in our electronics and communication engineering community, people are not that much of interested in antenna. They are every time they are interested in terms of embedded software, motherboard, software, and like the stuff. They are saying that there are jobs or there are a very huge demand out there into that communication on that software. Like, but nobody talk about the antenna. Okay, why? Because it is very difficult task to whatever the signal that you are generating, you need to send it into the air, and on the other side, that antenna need to capture that signal and again decode it into the electrical signal. So it is a difficult task is there, and very few people, like if you consider the any community of electronics, there are if there are 10 people are working on embedded, hardly one people are working on antenna. That type of the ratio is there because so these are the actually stuff is related to a mobile device and the antenna. Now consider that there are two devices are there. One is your mobile phone, one is your tower. Tower is also having antenna, your mobile phone also having antenna. Whatever the signal you are generating, you need to send it through your antenna and your mobile tower will capture that. And then whatever the process decoding, identifying that number and all the stuff going to be on the back end side. But over here it is first started with the example of, let's say you are having a two scenario. First scenario, you are calling from your landline phone to one particular mobile station. ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है या आपके पास एक टेलीफोन, तो आप मोबाइल से टेलीफोन या टेलीफोन से मोबाइल आप कॉल कर रहे हैं. Now how it is going to be happen? Because in one side it is a wired connection, another side it's a wireless connection. So what is going to be happen? Whatever this call and this management is all going to be done at the mobile switching center, which is called as a MSC. For the Rajkot, MSC is situated in I can say near a Chaudhary High School. There are Prasam building is there at that place. That Vodafone Idea MSC center is there. So what is the MSC center will do? All the call coming from entire Rajkot. Rajkot में से जहाँ से भी वोडाफोन की सिम कार्ड है और जो भी बंदा कॉल कर रहा है वो सब कॉल कहाँ पे आएंगे? वो बिल्डिंग पे. Now how it is coming? It is coming through the different intermediate antenna or different intermediate mobile towers. आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे वोडाफोन का टावर, तो मैं जब कॉल मिलाऊंगा तो कहाँ पे जाएगा? On that tower. Now that tower will communicate with that person building through the different hop or through the different intermediate antenna. Okay, so whatever the call generating from any particular area in the city, it is first generate, reach to that place, and from that place there are a huge devices. ये बड़ी रूम में ऐसे बहुत सारे ऐसे रैक, बहुत सारे ऐसा स्विचिंग सिस्टम, पूरा सर्वर ऐसा सेटअप होता है. And in that server it is having all the detail. आपका बैलेंस कितना है, कौन सी कॉलर ट्यून आप कर रहे हो, आपका मोबाइल ब्लैक लिस्टेड है या नहीं, कोई पुलिस की कोई एजेंसी उसके ऊपर वॉच कर रही है या नहीं, आपका कॉल रिकॉर्डिंग में जा रहा है या नहीं. ओके, हाउ मच बैलेंस इज देयर. और आप राजकोट से यहाँ से जाके अहमदाबाद में हो तो आपका रोमिंग लोकेशन अभी क्या है, आप यूएस गए हो तो वो कौन से नंबर पे आप जा रहे हो, आपने रोमिंग एक्टिवेट किया है नहीं. एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द एमएससी. Okay, so such type of the one center is there, and what is the task of entire infrastructure? To make that call reach to that station. Now वो station से बाकी सब connection होते हैं. Like वो station से अहमदाबाद call carry forward होता है. It is going to be carry forward on satellite if it is required. If it is carry forward to the BSNL center also. So it is having a MSC in between. From the MSC, it is connected to the public service telephone network. You can consider BSNL here, and then BSNL carry forward your call to your any landline. So you are situated in some hexagon shape or in one area. Let's say this is your Marwadi. That's a tower available at Marwadi. I am calling that particular person which is on this side on landline. I will dial in my mobile 02812333 like that number. So once I will just dial that number, this MSC will get the idea that this particular area
and in that area this person is calling that number and this number is related to landline. So that call I need to carry forward to PSTN and PSTN further carry forward it to that particular party. Okay, and MSC having all the details like ये नंबर है या नहीं, ये नंबर रोमिंग में चल रहा है, आपके पास बैलेंस नहीं है तो रिचार्ज करवाइए, everything this MSC will tell you. If it is satisfied with all the loops or criteria, कि बैलेंस है ठीक है, वैलिडिटी है ठीक है, ये कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है, ब्लॉक नहीं है ठीक है, then they will carry forward to the other party. Otherwise whatever the message you are receiving, it is directly given to them. Another stuff, let's say there are another scenario, there are a huge traffic in one particular area. यहाँ पे पहले 500 स्टूडेंट थे, अभी 3000 हो गए. So at that time that tower is going to start rejecting your call. Now what type of the message you are, when you are dialing that number, suddenly it will say that network is busy. You have experienced this stuff, network is busy. Okay, या फिर टूं 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 होके कॉल ड्रॉप हो जाता है. Now what is going to be happen, this particular thing happen on that particular tower only. टावर का क्या टास्क होता है, उसके पास एक पूल होता है, like I can say like that, this tower has allocated, there are whatever this multiplexing technique, FDM, DDM, CDM है, जो भी multiplexing technique apply करके यहाँ पे 500 कॉल हो सकते हैं at a time. Now suddenly there are 500 persons are talking in the phone in this area. Now whenever 501 particular person will came, what this tower will do, tower will first identify, is there any free channel is there to accommodate this user. If it is no, it will directly say that network is busy, your call is dropped. Okay, that's the one thing. What is the scenario when you can say you are calling to someone and that person on another call, आप किसी को कॉल कर रहे हो और वो बता रहा है दिस नंबर इज बिजी, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, इट इज गोइंग टू बी अ सेम थिंग, लाइक फर्स्ट इट इज रीच टू द एमएससी एंड एमएससी विल सेंड दैट कॉल टू लेट्स से टू अहमदाबाद. अहमदाबाद में वो बंदा है, ये कॉल उधर कैरी फॉरवर्ड होता है, वहां के टावर पे जाके चेक करता है कोई ये नंबर अभी ये लोकेशन में है, इज इट फ्री, whatever the link that I want to connect with this person, is it free? If it is not free, it will directly says that currently this user is busy. From the MSC only it will give you the answer कि right now जो भी आप नंबर अभी बोल रहे हो वो अभी किसी के साथ बात कर रहा है, that register I have at MSC, so I cannot connect your call, it will give you one cassette. Okay, so such type of the logic, such type of the stuff is going to be happening in the mobile communication. Have you guys understood? ना यार एनर्जेटिक बोल रहा हूँ, आप ऐसे सोने के मूड में समझ कर, चलो ठीक है. So what is going to be happen? This is a frequency reuse pattern. Now why frequency reuse pattern is going to required? So there are a very I can say very interesting phenomena behind that. If you have heard about that 2G spectrum, 3G spectrum, 4G spectrum, okay, so what do you mean by this all the spectrum? Let's say in India there are 5 companies are there, 5 mobile companies are there. So every government is going to decide that that band to this band, from this particular frequency to this particular frequency, we are going to allocate the band to different company. और उसी के लिए मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल बनाती है, अपना एंटेना डिजाइन करती है. इसी वजह से जो फोन आप यूएस में यूज कर रहे हो विदाउट रोमिंग, यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली बाय इंसर्टिंग द सिम कार्ड ऑफ वोडाफोन. व्हाई? बिकॉज़ वहां पे जो बैंड है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो एंटेना उसके लिए बना है, वो सेम यहाँ पे नहीं है. यू नीड टू डू सम क्रैक, यू नीड टू डू सम मैनेजमेंट, यू नीड टू जस्ट change some hardware, you need to change some antenna like that, then it is allowed to use. It's not universal, it is just dedicated for some company. So let's say there are a 2G spectrum is going to, like 2G spectrum बहुत सारे चीजें आपने at the time of UPA government you have seen this word where it 2G spectrum, okay, that kickback has taken by some of the person and the 2G spectrum. अभी वो राष्ट्रपति भवन में वहां पे एज अ मेन बंदा वो बैठता है संसद में और डिसाइड करता है जिसके ऊपर आपने चार्जेस लगाए कि ये करप्टेड पॉलिटिशियन, अभी वो संसद में सिग्नेचर करता है, ये कायदा लगेगा या नहीं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये हो सकता है. So at that time if you have heard this 2G spectrum, 3G spectrum, 4G spectrum, what's going to be happen, like 5 company will come to the door of the telecommunication
ministry that we want to establish our 2G infrastructure in India. Allocate us a band. आप हमको बैंड दीजिए ताकि उसमें हम हमारा सिम कार्ड बना सके, उस पे हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके. So whatever the band is there which is allocated by the Ministry of Telecommunication to, let's say, X company, for that X company those range is going to very limited, let's say 200 call. If you see the band allocated to one particular company, mobile cellular company, in that band only a 200 user can accommodate. सिर्फ 200 लोग ही उस बैंड के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. बट वोडाफोन के पास तो लेट्स से, और फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी देयर आर 5 करोड़ कस्टमर्स आते हैं. सो हाउ दोस 200 band allocated as a 200 customer, how you can accommodate 5 crore customer with the same company? We need to do some engineering. How it is possible? For that the concept of frequency reuse will come. What do you mean by frequency reuse? Consider करिए कि 200 कॉल एक टावर से आप एट अ टाइम कर सकते हो, तो आप उस टावर का पावर इतना रखो कि एक डिस्टेंस के बाद वो जो 200 कॉल है, लेट्स से this 200 you have divided into the 6 cluster, so 60 60 50 50 50 that users are there. So मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि यहाँ पे 1, ये क्लस्टर नंबर 1 में वो 1 से लेके 50 तक की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी मैं वही यहाँ पे रखूंगा. From 51 to 100 I am going to give it to the 2. Then we can say 150 to 101 to 150 I will give it to 3. Now whatever the frequency I have given at the 1, that frequency I can again reuse after some distance. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Whatever the power of the tower, जो टावर जो एंटेना रेडिएट करता है, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होगा ना उसका, वो पावर में उतना लिमिट करूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये टावर के बीच में इंटरफेस ना हो. तब ऐसा कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी मारवाड़ी के कैंपस पे यूज हो रही है 50 कस्टमर के लिए, वो सेम फ्रीक्वेंसी कालावर रोड पे भी कहीं पे यूज होती होगी, लेकिन वो कालावर रोड का टावर डायरेक्टली कैन नॉट कम्युनिकेट विद द टावर ऑफ मारवाड़ी. If I limit the power of that particular 2 tower, I can reuse those 50 customer again. So that's the concept of frequency reuse. Like you just discrete in, make it some clusters. In that cluster, allocate some band of the frequency and make sure that after some distance, you can again reuse those frequency. So this both not going to be communicated. Yes, last. क्या बोला मैंने यहाँ? क्या देख रहे हो मोबाइल में? हाँ, मेरे सामने बैठे हो मीटिंग में क्यों ज्वाइन आ रहे हो? मैं तो बोल लास्ट टाइम का तो वो तो मैं बाद में टाइम दूंगा ना. अभी तो लास्ट मैंने बोला कि अभी इंटरनेट डाल दो. कितने बजे अभी? 10:31. अभी आधा घंटा है. क्या होता है फ्रीक्वेंसी रियूज, बताइए. इज इट बोरिंग? डीसीएन लेक्चर में नहीं मजा आता है? मैं कंप्यूटर वाला हूं तो ये क्या कम्युनिकेशन का ये सोनू? डू यू हैव सच टाइप ऑफ द थिंग? बताइए. इंटरेस्टिंग नहीं है? नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूं? कुछ चेंज करने की जरूरत है तो बताइए, तो मैं उस हिसाब से बात करूं. सो यू विल गेट ट्रैक ऑन द सब्जेक्ट. But if it is there, please tell me. Like, sir, this is not the way good you can do this stuff. So, अभी एक महीना हमारे पास है. So, if you get this stuff very easily, so it is benefited to you also. कल जाके आप Nokia Siemens में, Vodafone में, या you can say Samsung का चाइना या जापान या कोई भी बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां पे जाके मोबाइल डिजाइन करोगे. एज अ कंप्यूटर इंजीनियर यू आर डिसाइडिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर दैट. तो कैसे मोबाइल काम करता है वो तो उस टाइम पता हो होना चाहिए ना. उस टाइम बोलोगे हमारा फैकल्टी पढ़ाता ही नहीं थे. Whatever the stuff you are learning in engineering, it's never going to be used in industry. That's the very, ये बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा बदनाम सेंटेंस है कि आप जो हमको कॉलेज में सिखाते ना, मैं जो भी कोई इंडस्ट्री में कोई बच्चे को बात करता हूँ ना, जो यहाँ पे कभी लेक्चर में ध्यान ही नहीं दिया, वो क्या बोलता है, आप जो पढ़ाते हो ना सर पूरा अलग है इंडस्ट्री में. मैं बोला यार
किसने इंडस्ट्री बनाई? इंजीनियर ने। कहां पे पढ़ के आया था? इंजीनियरिंग कॉलेज में। कैसे बोल सकता है नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं ना कि भाई कोई एक इंजीनियरिंग स्कूल नहीं थी, वहां पे जाके ये बंदा मोबाइल डिवाइस बनाया। किसने? 10वीं दौरान वाले ने, 5वीं दौरान कॉमर्स वाले ने, आर्ट्स वाले ने। मैनेजमेंट किया होगा आर्ट्स वाले ने, लेकिन बनाया तो इंजीनियर ने ना। ऐसा ही बन गया नहीं, मैं कॉमर्स किया हूँ, आर्ट्स किया हूँ, फिर भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूँ, मैं पूरा मोबाइल बना दूंगा। ऐसा होता है क्या? इंडस्ट्री और टेक्निकल दोनों अलग ही है। प्रोफेसर को सुनो तो सही, ये फ्रीक्वेंसी रिवर्स कंसेप्ट पहले यहीं से साइंटिस्ट प्रोफेसर बना के पेपर पब्लिश करते हैं, वही जाके इंडस्ट्री यूज करती है, वही जाके आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हो। यही ट्रेंड होता है। बाद में मेरे को कोसोगे यार ये बंदा था ही नहीं, मेरे को चिल्ला दिया था, अभी देखो इसका एक चीज नहीं आ रहा। मेरे एक फैकल्टी थे धोड़किया सर करके, एक बार ऐसा ही कमांड पढ़ा रहे, सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ये कभी यूज ही नहीं होता, इंडस्ट्री का पढ़ाओ ना ऐसा। उस टाइम वो सर कुछ नहीं बोले। मेरा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो उसी के ऊपर था जो सर वो उस दिन पढ़ा रहे। एटी कमांड बोलते थे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में आप जब डायल करते हो ना 90333160, और जैसे ही आप डायल बटन दबाते हो तो क्या होता होगा वो मोबाइल के पीछे कि आप डायल बटन दबाओ तो वो आपका पूरा हार्डवेयर इट्स टेक अ कमांड एज अ डायल एंड इट इज कैरी फॉरवर्ड टू दैट। उसको बोलते एटी कमांड। AT command, that's it's convert whatever your process is there that you have done with dial pad, it is converted into the machine language, और वो बाद में जाके वो एक कोडिंग रहता है, वो कोडिंग में वो नंबर फीड होता है और वो कम्युनिकेट करता है आपके वो चिप के साथ, मदरबोर्ड के साथ। एट द टाइम सर सेड नाउ यू गॉट द आंसर, क्यों ये यूज, क्योंकि अभी तेरा फाइनल का प्रोजेक्ट तो अभी सीख सब कोड। सो इट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज पे अटेंशन। बोरिंग है बता दीजिए सर नहीं हो रहा है कुछ, इसको फिर से समझाए, आई विल सी। बट अगर सामने बैठे हो तो प्लीज, मेरे को भी अच्छा लगेगा सब लोग सुन रहे हैं, वरना क्या मैं कथा किए जा रहा हूँ आंख बंद करके, आपको सुनना है नहीं सुनना है अपने हिसाब से, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो। So that's the stuff. Limit your frequency, limit your number of frequency and then power in such a manner that you can reuse it afterward. So if you apply such type of the pattern, frequency reuse concept is going to be allow you to accommodate more and more user. आप देखते होंगे कि पहले आप जहां पे रहते थे उसके आजू बाजू में कितने टावर थे, अभी ये 3-4 साल में और टावर वहां पे आ गए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ, आप कालावा रोड, डेट्स 150 फीट रिंग रोड राजकोट में देखो तो पहले वहां पे कोई नहीं रहता था, अभी रह रहे तो वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा आरएमसी की वो रोड डिवाइडर है उसके ऊपर भी टावर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाना ना, इट इज इलीगल, सो दे आर इंस्टॉलिंग ऑन द footpath or we can say in a road divider, so that interference or we can say जो नुकसान होता था वो कम हो जाए। So now they are paying to government and government will earning money from that. So that tower आप देख रहे हो, बहुत सारे टावर इंस्टॉल हो रहे हैं, आपको वोडाफोन में मैसेज भी आ रहा होगा ये एरिया में हमने नया टावर आज इंस्टॉल किया। Why it's required? To give you more and more connectivity if the number of users are going to increase, because then it will increase the tower. That's the only way to do that. Yes. फैक्टर और फोर और फैक्टर, लाइक यू कैन रीयूज इट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर फोर, मतलब कि आप 4 क्लस्टर के बाद उसको रिपीट करो या 7 क्लस्टर के बाद रिपीट करो। तो दैट्स द टू वे। लाइक छोटा सा एरिया है, लाइक यू कैन से देयर आर स्मॉल सिटी, बट आप अहमदाबाद में जाओ या राजकोट में जाओ या फिर आप कंसीडर करो यू आर गोइंग टू जामनगर, okay, or if you are going to Gondal, so we can say Gondal is very low area, okay, as compared to the density, जितने भी कस्टमर चाहिए राजकोट से तो बहुत कम हो गए ना, you can reuse it with vector 4, उसमें ही काम हो जाएगा, क्योंकि number of tower you need to install less, but if there are a number of factor 7 you need to install the 7 tower to do that. So which type of the area, what is the density of your customer, according to that reuse factors. Okay? So AMPS is an analog cellular phone which is using a FTMA. Okay, and this is the stuff like whatever the band is allocated by those Ministry of Telecommunication, they are having a up band and we can say forward band and backward band, or we can say forward and reverse communication is there. Why is it so? If you have remember our first chapter, there are three type of the communication is there: full duplex, half duplex, and simplex. Simplex, it means our television broadcast.
कि जो चैनल ब्रॉडकास्ट हो रही है आपको सुनना है, यू कैन नॉट सेंड अगेन सिग्नल टू देम, दैट्स द सिंपलेक्स कम्युनिकेशन वन वे. व्हाट इज अ हाफ डुप्लेक्स? इट्स लाइक अ वॉकी टॉकी. एक बंदा पहले अपनी बात पूरी करेगा, बाद में दूसरा बोल सकेगा, दैट्स द हाफ डुप्लेक्स. व्हाट इज अ फुल डुप्लेक्स? साइमल्टेनियसली बोथ कैन कम्युनिकेट. सो मोबाइल कम अंडर दैट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. तो आप बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो साथ में. So we can say how it is going to happen. It is going to happen whenever you just start the conversation, a two band is going to allocate it to you. जैसे ही वो सामने वाला बंदा फोन पिकअप करता है तो यहाँ पे आपको और टावर से आपको दो बैंड मिलेंगे, एक आपकी बात वहां पे रखने के लिए, दूसरा वो बात आपकी तरफ पहुंचाने के लिए. टू बैंड इज एलोकेटेड टू यू एज वेल एज वहां पे जो बंदा है उसको भी टावर में से दो बैंड मिलेंगे, forward band and reverse band. So bi-directional communication you can establish. So there are a FDM, or we can say frequency division multiplex type of the stuff is there. So from the mobile band station and tower station, there are a 30 kilohertz of the small chunks are there which is going to allocated whenever you are doing the communication. This is simple. Now whatever the multiplexing, time division, CDM, all going to be added in it, but this is just a fundamental from base to mobile or mobile to base. Now, whatever this 30 kilohertz analog band is coming, it is going to be frequency division multiplex using a FDMA technique, and such type of the 25 megahertz of the band going to be generated. So you can say with respect to this 25 megahertz band, such 832 channel you can accommodate. Now in that channel also there are some control channels, there are some voice channel. Now what do you mean by this control channel and voice channel? Control channel, like डायरेक्टली वो कम्युनिकेशन वॉइस कम्युनिकेशन होना स्टार्ट नहीं होता, पहले आप नंबर डायल करते हो. ओके, सो व्हेनेवर यू डायल दैट नंबर एंड यू प्रेस अ ग्रीन बटन, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइक इनिशियली इट इज समथिंग टो टो टो, देन रिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इट. ये प्रोसेस होती है जब आप डायल करते हो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर रिंग गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड यू आर गोइंग टू डायल दैट फोन, और वो बंदा जब वो फोन अपना पिक करता है, जैसे ही उसने फोन पिक किया, इट इज अलोकेटेड अ वॉइस बैंड फ्रॉम दिस वन. वो क्या अलोकेट करता है? वॉइस सिग्नल, और वी कैन से देयर आर अ वॉइस बैंड इज गोइंग टू अलोकेट इट. बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट यू हैव डायल द फोन, रिंग गया, रिंग बजा और उसने फोन उठाया, ये ड्यूरेशन है फोन उठाने से और आपके डायल करने के बीच में, that all the signal is going to be managed by the control signal. So whatever this dialing frequency, whatever this whether it is network is available or not, busy tone, ये जो भी चीज है वो ये कंट्रोल चैनल पे चलती है. एक बार कंट्रोल चैनल ने ओके कर दिया, यस, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, allocate the voice band and now they can communicate. These are the stuff. So initially कंट्रोल चैनल इनिशिएट होती है जैसे आप डायल करते हो, एक बार वहां पे फोन पिकअप किया, now it is a give you the voice band. Okay, that's the stuff going on. There are a different generation like 2G, 3G, 4G. This is an example of second generation cellular telephone in which there are a further segregation is there. IS-136, GSM, CDMA. जब भी आप अपना नेटवर्क सिलेक्ट करो ना कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, इफ यू सेट दोस नेटवर्क मैन्युअली, तो आपने इस तरह के कुछ वर्डिंग देखे होंगे, CDMA, VOLTE, 2G, 3G. This is not what are this stuff are there? It is a generations. अगर आपके पास अभी 4G फोन है, all the mobile right now having the 4G capacity VoLTE, सबके पास 4G फोन है, अगर आप उसमें 2G भी सिलेक्ट करो ना तो भी आप बात कर सकते हो. You can select that band. Okay, so what is the challenge is whenever the mobile company will design the mobile phone that अगर वो आज 5G फोन लॉन्च करता है तो उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 4G में भी काम करे, 3G में भी काम करे, 2G में भी काम करे. ओके, क्योंकि कहीं पे हो सकता है आप 5G अहमदाबाद में, राजकोट में है, 5G गोंडल में नहीं है, तो आप वहां पे जाओ तो आपका फोन डब्बा नहीं होना चाहिए. वहां पे कौन सा टावर है, 3G 4G, यू कैन टॉक विद दैट. तो आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, इट विल गिव यू द ई इज देयर, ई आ जाता है. क्यों? At that time the 4G VoLTE is not available. Now they are communicating in terms of 2G or 3G. It is selecting automatically.
that your mobile phone select those band automatically, and that is the why whenever you are traveling in a ट्रेन और बस अगर आप एक्सपीरियंस किए हो तो आपका बैटरी जल्दी से ड्रेन होता है क्यों बिकॉज व्हेन दिस इन दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी देयर आर सेवरल टावर आर देयर और वो टावर में अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग अलग जनरेशन है टू डू दिस स्विचिंग योर मोबाइल फोन रिक्वायर्ड मोर पावर अगर आपके पास कम बैटरी है 3000 2500 तो आपका बैटरी झड़प से ड्रेन हो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ओके आपका फोन ऐसे ही पड़ा है आप कुछ ब्राउज नहीं कर रहे हो बट इफ यू आर स्विचिंग इफ यू आर ट्रैवलिंग your battery automatically get drained because of this switching from one generation to the in that generation also there are a separate like there are IS-136 GSM CDMA and what is this generation will having this generation is differ as per the number of user can accommodate ओके नई नई टेक्नोलॉजी आती है बोलते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन का जो पूरा आपका सॉफ्टवेयर था प्रीवियस जनरेशन का पूरा कम्युनिकेशन था इसमें 832 यूजर्स ही हो सकते हैं लेकिन अगर आप सीडीएमए में जाओ तो आप यूजर्स भी बढ़ा सकते हो डेटा रेट भी बढ़ेगा so that new generation will come to that okay so how it is going to increase the number of users or we can say speed by applying a different multiplexing technique so if we can say in a second generation first version it is having a TDMA and FDMA multiplexing technique while we can say in GSM that speed is higher, communication speed is higher and TDMA, FDMA is there. In 2.5G or 2.75G, you can say you are having a IS-95, having a CDMA and FDMA. So we can say if Vodafone is launching a third version of 2G, at that time what they are doing now, they are launching their software, they are putting their tower with such upgradability, which is working on CDM and FDM. So such type of the generation is going to be there. Okay. So what is going to be happen in such two different generate or we can say in this two different multiplexing technique. So it will be happen like that whatever the mobile phone you are using it is first get digitized. It is getting digitized because you are having a voice channel, it's analog and your mobile phone working on digital signal. So first is going to convert analog to digital. Then whatever the data rate is there, it is going to multiplex as a TDMA. So TDMA, FDMA, CDMA, we all know. Okay, time division multiplexing, it means it is give a specific time period to all the channels. Like one microsecond, one microsecond like that to all the channels. According to that, they are going to capture a different data rate from different station and whatever the kbps rate is coming in the TDMA, it is do the QPSK. Again, whatever the combined data come over here, it is again convert to analog and then it is going to FDMA. पहले एनालॉग का डिजिटल करके मल्टीप्लेक्स किया जो एक कंबाइंड डेटा बचा उसका फिर से एनालॉग करके एफडीएमए किया so what you have done actually in this 30 kilohertz you have actually accommodated a 3 voice channel जो एक वॉइस चैनल 30 किलोहर्ट्ज की एक बंदा यूज कर सकता था आपने टीडीएमए अप्लाई करके वो बैंड 3 लोग एक साथ यूज कर सके ऐसा कर दिया so you can say whatever your capacity is there previously with 25 megahertz which is a 832 yes बोलो ना बोलो ठीक है
Okay, so it is going to be happen. So previously, whatever the 832 users are there, now it is increased to 3 times more by combining these two techniques. So it is going to be happen like number of users going to increase by applying this multiplexing technique or multiple access technique. So DAMPS IS-136, the digital cellular telephone using a TDMA and FDMA as we have seen previously. So whatever those channels are there from 892 to 915, whatever the number of reverse band, forward band, such type of the GSM band channels are going, and in we can say 25 megahertz, each having like that's a consideration of second type of the generation where 25 megahertz band containing 124 channel, and each channel having a 200 kilohertz of the size. ओके 200 किलोवाट्स का साइज है ऐसी हमारे पास 124 था सो कंबाइंडली इफ यू टू कैन डू दैट सो देयर आर टू सो प्रीवियसली इट्स अ 30 किलोवाट्स जो हम यहां पे देखे थे DAMPS जनरेशन में so 30 kilowatts is there like in the GSM it is upgraded to 200 kilowatts. Now under that 200 kilowatts what they are doing in a GSM they are using the same stuff, okay, TDMA FDMA, it is doing the same but now the number of users is going to increase to 8 यूजर्स है सब 8 यूजर्स को उसका इंडिविजुअल एक फ्रेम बनता है एंड सच टाइप ऑफ द फ्रेम इज गोइंग टू बी हैविंग अ 278 kbps ऑफ द डेटा रेट इज सो पहले क्या करते हैं टीडीए में करते हैं अलग अलग फ्रेम लिया combining with that frame it is again going to the FDMA on a 200 kilohertz. So we can say in the 200 kilohertz right now you are having a data of 8 users. Okay, so if you are simply considering a 250 megahertz of the band, you can accommodate only 124 users. But with this one, it's multiplied by 124 multiplied by 8. That much of users you can accommodate with that band. It is possible. So how this multi-frame concept will be there? As you can see, this is the frame concept. So how this multi-frame concept? For user, it will give the 65-bit data. They are adding some error bit to correct to give that error correction and detection facility. There are extra bit is going to add, then there are some control bits going to be added, and then that 156.25 bit it is in a one slot. ऐसे हर एक चैनल्स के एक स्लॉट मिलते तो एक पूरा फ्रेम बनता है. So we can say there are 8 slot creating a one frame, and such 26 frame is going to create it in a one particular 120 millisecond. तो 128 मिलीसेकंड में आपके पास 8 फ्रेम 8 यूजर्स के पास ऐसी 26 फ्रेम आती है. So every user is giving a 26 signals or 26 data, okay, and they are creating a 120 millisecond of one particular frame, और बाद में ये जाके FDMA होती है. So likewise, it is a digital. It is using a digital subscriber link. So that's the digital data is going added in that one and creating a mobile communication. So GSMA is user TDMA and FDMA. In IS-95, it is a similar type of the stuff, but this just for an example, it is using a CDMA and FDMA. So whatever the modulation technique or multiplexing technique, the CDMA is going. As for the CDMA, we require a key. So every station is going to encoded with one key. So जितने भी यहाँ पे 63 channel है हमारे पास CDMA. So from every channel, it is having a different key is there, and with that key, the data is going to encoded and then feed it to the FDMA. So we can send CDMA in one channel of 1.288 megahertz. You are using a 63 channels digital channel. You are accommodated with that. So number of users is increased to 63. So 1.228 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड ऐसी एक बैंड में आपके पास 63 चैनल्स होगी if you doing with this. So as I have told you, by using a FDMA TDMA combined, the number of channel is going to be increased. IS-95 in a reverse when we can say from tower to mobile and mobile to tower, it's a similar process like FDMA in reverse. To decode that stuff, they are using a DSSS. Okay, and then there are same type of this chip are there, and then there are digital signal are it's good 3 kilohertz signal is. So it is in bi-directional. When you are the mobile to, or we can say mobile tower to tower communication or tower to headset communication, this multiplexing, demultiplexing technique is. So 1052 is there.
Let me will see how many stuff that is going to be. Okay, so this is all the stuff. Like if we are going with the third generation, so in third generation also such type of the block diagram is there, कि जिसमें channel कैसे accommodate होगी, band कैसे allocate होगा. So likewise in third generation there are a CDMA, 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 TDMA, 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 FDMA. So likewise the 5 version are there in 3G. We have not talk over here for the 4G, but you need to get an idea that when I say 2G, 3G, 4G, first of all, what do you meaning by that? Meaning of those, there are some allocated band is there. Now, in that band also, to accommodate more and more users, there are a different generation of the technology, which will give a different technique to accommodate the user, to do the digital telephony and make a successful. So next lecture onwards, we are going to discuss about the satellite networks, how the satellite communication is going to work. Okay, so I request that all of you over here just log into that and write your enrollment number and name. So on behalf of one, you can write it to other also. एक login होके दूसरा भी कर सकता है. But right now, if you have any question, we have 8 minutes of time around over here. So you please write your enrollment number and name. If you have any doubt, any question, you can ask me. Otherwise, you can leave. Make sure that everyone be ready for the exam on Saturday. In Saturday TC2 TC3 का लैब भी है, बैच ए और बी का. डोंट वरी, वो लैब में ही आप दे दीजिए आपका एग्जाम. हमारे पास और भी 4 लैब पड़ी होगी अप टू द सेमेस्टर एंड. वी विल कवर ऑल द सिलेबस. ओके, जो भी आपका लैब बाकी है आप कर सकते हैं. और मैं फिर से रिपीट करता हूँ TC2 TC3 वालों के लिए, don't worry about the deadline of the laboratory. You have a time up to the semester end. आप semester end जब भी declare होता है तब आप वो assignment submit कर सकते हो, वो lab submit कर सकते हो. ठीक है? So don't worry about those deadline. You first complete those stuff. ठीक है? You can write your enrollment number and name and then you can leave. If you have any doubt, any question, you can open your mic and tell me.
Okay, you can leave if you have written your enrollment number and name. Everybody.